हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एली और आज हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखेंगे, वो भी टू एग्जाम्पल के साथ। तो आप भी मेरे साथ साथ ज़रूर पढ़ना, तो आपको भी पढ़ना आ जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलकर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलकर पढ़ सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। A for apple and A for aeroplane. B, आप भी बोलो B. B for butterfly and B for bananas. C. C for cat and C for car. D. D for dog and D for dates. E for elephant and E for eggs. F for fox and F for fish. G, आप भी बोलो G. G for grapes and G for girl. Are you girl? H for horse and H for house. I for ice cream and I for igloo. J for juice and J for joker. K for kite and K for kiwi. L for lion and L for lychee. M for mango and M for monkey. N for nest and N for nuts. O for orange and O for ostrich. P for parrot. P for peas. Q for green. Q for quail.
R for rabbit. And also R for rose. Do you like rose? S. S. S for zip. S for swan. T. T. T for tiger. और क्या होता है? T for tomato. U. 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 U for unicorn. और क्या होता है? U for umbrella. V. V. V for van. And V for violin. W. W. W for watermelon. And also W for watch. X. X. X for xylophone. And X for Xmas tree. Y. Y. Y for yak. Y for yo-yo. Z. Z. Z for zebra. Z for jeep. बहुत अच्छा दोस्तों, आपने मेरे साथ साथ बहुत अच्छा पढ़ा। क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हम लोग रोज रोज मिलकर पढ़ सके। तो चलिए मिलकर पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।